आई एम एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटेड पर्सन. ये वीडियो अगर आप मेरे को ऑलरेडी जानते हैं, मेरे लाइफ फॉलो करते हैं, फिर आपके लिए इट विल बी अ वे फॉर यू टू गेट टू नो मी बेटर. You know, a lot of people who know me ऊपर ऊपर से think I'm a very happy person. I'm always smiling, I'm always laughing. That's not been the case for the past 2 years. आप मेरा जो the part of my life that you see is when I make videos. और मेरी ज़िंदगी का वो बहुत ही छोटा पार्ट है. um, I can have a whole conversation with you and forget about you the next day. मेरे को इतने लोग मिलते हैं, मैं पूरी बात करूँगा, 5 दिन के बाद मिलेंगे, मेरे को ना मेरे दिमाग से लोग निकल जाते हैं कभी कभी. आई एम ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, एजी. रात को मेरे से सोया नहीं जाता. देर आर टाइम्स व्हेन आई जस्ट फील लाइक आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट राइट नाउ बी इफ आई जस्ट स्लीप लाइक शांति से. पीयूष है मेरे घर आता है बहुत बार, मैं उसको जब सोते हुए देखता हूँ, मेरे बाजू में सोता है, उसको जप्पी मार के सोता हूँ. एंड आई एम सो एनवियस ऑफ दैट किड. He sleeps like a baby, literally, okay? You know, and my cousin Lovely was in Bombay. Like I said, this video is about my life. This is not content. All. अगर आप मेरे को जानते हैं, फिर आपको इसमें रुचि होगी. Lovely was in Bombay, my cousin, and Lovely और पीयूष जो साथ में चिल करते थे. I would see ये जो साथ में होते हैं, हंसी मजाक इनका कुछ 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 चलता रहेगा. The moment I walk into room, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं आ जाती है, which is funny because एक मेरा भाई है, एक मेरा छोटा भाई है, as in, you know, like they both very close to me. And I keep thinking, what am I so stressed out about? What am I so frustrated with? Why am I always so edgy? People have become to really irritate me. छोटी छोटी चीज़ें लोग करते हैं because I feel like, you know, why do people lie? Why do people not come on time? You know, a lot of the things हो सकती है कि proper चीज़ें होनी चाहिए जो मैं अपने हिसाब से करता हूँ. But the world is not going to be like that. And पिछले कुछ दिनों में एक्चुअली जब से लवली मेरे घर आया था, बहुत कुछ बदला है. लवली और पीयूष ने जो मिलकर मेरी जो क्लास ली है ना, बहुत प्यार से उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें समझाई. एक तो मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है हर छोटे चीज़ में. यू नो, एंड आई हैव रियलाइज्ड पिछले कुछ दिनों में मेरा काफ़ी स्वभाव बदला है. एक तो सबसे पहले जो मेरा एक तरफा प्यार था, वो तो जो भांडा फूटा एक ही बार, मतलब बहुत मस्त फूट. जिस बंदे के लिए मैंने सब कुछ किया, आई मीन आई डिड एवरीथिंग फॉर हिम, द ही एक्चुअली एक्टेड इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली एंड ऑल. उससे बहुत अच्छी चीज़ है. एक वो पूरा चैप्टर ना बड़े आराम से मैं क्लोज कर पाया बिकॉज मेरे पास जितने भी लोग थे, एवरीवन सेड भाई ये बंदा तुमको मतलब सिर्फ काम है इसलिए तुम्हारे साथ है. एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, बट आई थिंक इवन दैट चैप्टर एंडिंग डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. You know, when a lot of people look at me, and I'm hoping my story is a story of inspiration for you. जो बंदा देखता है कि भाई बॉम्बे में तुम्हारे पास बंगला है, 2 दूसरे घर हैं, यू हैव अ BMW नाउ, यू हैव सो मेनी पीपल, यू हैव सो मच स्टाफ. दूर से देखता है पारस की लाइफ बड़ी परफेक्ट है, एंड है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड अबाउट ऑल दैट. पर जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं ना, आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट दिस द अदर डे. आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉट. वो पेपर पेन लिख के एक पर्स करूँ, उसका मैं सबको बताता हूँ कि जब तुम्हारी प्रॉब्लम्स होती है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन योर प्रॉब्लम्स एंड राइट द फर्स्ट सोल्यूशन दैट कम्स टू यू. सो आई वाज थिंकिंग अबाउट द फैक्ट दैट मैं जब सोता हूँ, मैं काम के बारे में सोचता हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ काम के बारे में सोचता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वर्क वर्क वर्क. एंड अंकुर, माय बिजनेस पार्टनर, ही इज आल्सो लाइक दैट. मैं पीयूष को बोल रहा था, ऐसे अगर तुमको लगता है रिच पीपल मैं सदमे में हूँ, तो मेरे पार्टनर अंकुर को मिलेगा, वो तो मेरे से ज़्यादा भी सदमे में चल रहा रहता है. अंकुर की तो शक्ल देखोगे, यू थिंकिंग पारस और अंकुर सक्सेसफुल, तो छोड़ दोगे, यू लाइक ये दोनों तो मतलब इनको थेरेपी की ज़रूरत है. एंड व्हाई डज दैट हैपन? यू नो, आई कीप थिंकिंग दिस इज समथिंग टू विद योर पेरेंट्स. बचपन से आई वॉज ऑलवेज पैसा बनाना है, सक्सेसफुल होना है, अपना घर होना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, ये वो है. यू नो, जब तक डैड थे मुझे वैलिडेशन मिलता रहता था. आपका बाप जब आपके पीठ पे से हाथ फट फट करता है ना, बोलता बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बड़ी चीज़ होती है. एंड माई डैड वॉज ऑलवेज लाइक दैट. इट्स बीन 2 years सिंस आई लॉस्ट डैड, एंड आई थिंक वो कहीं ना मेरा कंपस बहुत हिल गया. मैं 1-1.5 साल तो मैं ट्रैवल ही करता गया, अंधाधुंध. आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग 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 ट्रैवलिंग. बट मेरे को इस पिछले ट्रैवल के बाद रियलाइज़ हुआ, आई हैव टू बी इन बॉम्बे टू मेक अ लाइफ हियर विद माई फ्रेंड्स. अगले 1 महीने के लिए मैं इस बार बॉम्बे में हूँ. मेरा अगला ट्रिप है, आई एम गोइंग टू गो टू टोक्यो एंड आई एम गोइंग टू गो टू मनीला, फिलीपींस. आई बुक्ड अ नाइस क्रूज इन नवंबर. बट 1 महीना मैंने अपने बॉम्बे में दिया. एंड आई टेल यू व्हाई दिस इज बाय पेरेंट्स. कोई फिर को बताने के लिए नहीं है, यू डन इट.
आई हैव नोबडी टू टेल मी भाई तुमने कर दिया जो लाइफ में करना होता है, कि तुमको पैसे बनाने होते हैं तुम बना रहे हो, नाम कमाना होता है थोड़ा बहुत, आई फील लाइक आई हैव सम क्रेडिबिलिटी, एक कंफर्ट चाहिए होता है लाइफ में, आई फील लाइक आई हैव गॉट इट. The way I live my life, I have a lot of things that are great. I just don't have someone to tell me that you made it. Your inner child sometimes is almost begging for some sort of validation. And I feel like when you don't have parents, there is no one to give it to you. मैं ना कोरिया गया था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है गौरव सहारन. I was sitting with him and मैं होटल में था, तो he came and spent time with me there. And then he said, listen, come to my house. And I, except for family, I don't stay with friends. I'll never do it. In fact, he's the only friend I've actually stayed in his house. And over the weekend, I think for 2 days, I went to his house. मैंने पता नहीं क्यों ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था. I went into his house thinking nothing. And I walked into this house Gaurav has made in Korea. Beautiful home. Very nicely done. Very tastefully done. जो चीज़ें थी, जो मतलब उस बंदे ने ख्याल रखा है घर का. And you can see he's doing well. और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको कुछ 8-10 साल से जानता हूँ, साथ में वर्कआउट करते थे, जिम विम करते थे. And then we lost touch and we suddenly just got back in touch. And I remember just sitting with him saying, Gaurav, I'm so proud of you. मैंने उसको इतना ही बोला. And he started crying, okay? And he burst out into tears. And we had this funny, awkward moment and we laughed about it. And I've never asked him about his father. Actually, I don't know what his situation is, but I don't know. Like, I'm not sure what the story there is. But I'm assuming he didn't grow up with his father around him. I don't know what. I have never asked him actually. But because I think that father figure or that parent figure was missing from his life, वो जो एक validation होता है ना, कोई तुमको बोले कि तुमने अच्छा किया है, वो बंदा मिस करता है. And I think I have reached that stage. My father was a wonderful man. He was a great friend. He was a terrible father. He was a really good friend. आज स्वीटी मामा से मेरी बात हुई थी, वन ऑफ माई मामूज, एंड ही से बेटा तुम दारू वाले को चक्कर में मत पड़ना, जो बीच में मैं फिसलने लग गया था एक्चुअली. इवन रोनी भैया, माई कज़न फ्रॉम अमेरिका, ही से भाई तू दारू से दूर रहे, बिकॉज एडिक्शन रन्स इन द फैमिली. और कई बार ना मैं फिसलने लग गया हूँ दारू पी के. फिसल मतलब नॉट फिजिकली बट मतलब वेर हम लाइक हाँ 1 2 3 मैं मेरे ब्लैकआउट्स हो गए 2 3 बार. वो अलग बात है मैं नंगा उठाऊँ ये वो, बट वो किंग की स्टोरी जब मैं बताऊँगा, दिस इज एन इमोशनल वीडियो, सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग एल्स अबाउट माई लाइफ. बट आई थिंक वो आपका जो वैलिडेशन होती है ना, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यार दीज थिंग्स साउंड लाइक स्टूपिड क्लीशेज. आपके पेरेंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है. If your parents are good people, I understand everyone's parents are not great. My father had multiple issues with alcoholism, but he was a great friend, like I said. वो नार्सिसिज्म मेरे डैड में भी था, मुझ में भी है. मेरे डैड ने पूरी ज़िंदगी अपने लिए जी, मैं पूरी ज़िंदगी अपने लिए जी रहा हूँ. एंड दैट्स ओके ऑल्सो, वी कम फॉर आवरसेल्व्स एंड वी लिव. पर आई थिंक मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचने लग गया हूँ ना आजकल कि भाई मैं इतना उदास क्यों था. कल जैसे मेरी हालत इतनी बुरी थी, मैंने ना बीमार पड़ गया था. आई वॉज क्राइंग, आई वॉज जस्ट in a very bad condition. I was just throwing up. I had fever. I had a headache. I was just feeling so alone. And I think in those moments, भाई बहुत selfish प्राणी हैं हम लोग. मैं डैड को ऐसे कभी कभी मिस करता हूँ, कुछ अच्छा होता है मिस करता हूँ. पर जब बंदा बीमार होता है ना, सबसे ज़्यादा आपको तब लोगों की याद आती है, बिकॉज उसमें भी स्वार्थ है. बिकॉज आई एम लाइक यू आर मिसिंग समवन. मैं अपनी नज़र झाड़ रहा था कल खुद ही. एंड आई वाज माई डैड वुड ऑलवेज झाड़ो मैं नज़र. तो पहले डैड के बाद मैं कभी कभी चाची को फ़ोन कर देता था, या आई वुड कॉल कुमार सेन एंड से. बट आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग आई वॉन्ट टू बी मोर सेल्फ रिलायंट. मैं थोड़ा भी जाना वाना भी विजिट भी थोड़े कम कर दिए हैं दिल्ली में और कुमार सेन में भी, बिकॉज आई हैव रियलाइज आई एम नॉट एबल टू होस्ट एनीवन. जब मेरे कोई घर आ जाए मैं ना परेशान हो जाता हूँ ऑनेस्टली. लवली को तो मैंने बुलाया था, एंड दैट वाज ओनली पर्सन आई कॉल्ड, बट बाकी एनीवन सेज आई एम कमिंग, आई ब्लैंकली से नो. और फिर मेरे को कहने का लगता है यार वो भी फेयर नहीं है. अगर तुम इतना जाते हो तो पीपल शुड आल्सो बी एबल टू कम. तो अगर तुम नहीं निभा सकते हो, आई थिंक द मोस्ट मैच्योर थिंग देयर इज वो आना जाना रखो ही मत. तो मैं थोड़ा सा कट डाउन करने लग गया हूँ एक्चुअली इसको, which could be a decision I might regret later, but that is what it is. But I think the long story short of this is when you see people being successful, and again, I am always thankful for what God has given me. I have a lot of things that people can just dream of.
द फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू गो एनीवेयर, द फ्रीडम कि आप कहीं भी पासपोर्ट उठाओ कहीं भी चले जाओ, आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता। और ये मैं कहीं ना कहीं बताऊँ कि सच्ची एक चीज़ आई थिंक मेरे लिए होता है, बिकॉज अंकुर में हम दोनों ऐसे स्वभाव के हैं। हम जितना पैसा कमाते हैं हमारे दिल से आवाज़ आती है हम उतना दान पुण्य करें हमारे साथ। एक्चुअली दान पुण्य तो अंकुर का मतलब है, मेरे को दान वान समझ में नहीं आता, मेरे को समझ आता है एम्पावरमेंट। तो अंकुर की अच्छी चीज़, हम जो भी कमाते हैं ना वो बहुत दान मान करता है, बहुत प्यार से करता है। एंड आई लर्न दैट जेनरॉसिटी फ्रॉम हिम। मेरा फंडा दान वाला नहीं, मेरा फंडा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। पर जो भी है दोनों हम मिला के कुछ ना कुछ करके वी एनेबल पीपल, एंड आई थिंक दैट इज बीन अ गुड रीजन फॉर आवर सक्सेस ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक दैट कर्मा इज फाइंडिंग इट्स वे बैक टू अस। But I just want to say that you can be a very wealthy person and you can be very depressed. I don't hide the fact that I go through lots of frustration and lots of anxiety and lots of stuff. But yeah, you miss your parents. You miss them so much. Um, and I think for the first time, I was wishing for a long time also to start dating someone. But वो मेरे बहुत difficult हो गया अभी actually for me to find a guy who's good looking and rich and out and a whole and standing on his own 2 feet and all is always challenging. To find anyone to date is easy, to find quality people is always difficult, and I am a walking red flag. जितने बैग मेरे इमोशनल बैगेज में लेके आता है ना, मतलब I know I am not easy to be with at all. um, I'm moody, I'm temperamental, and a lot of the Paris that you see on social media is just the Paris you see on social media. It's another matter you also see this side of me, but वो जो रील वाला कंटेंट आप देखते हो वो आप वो परफॉर्मेंस देख रहे हो, वो मैं नहीं हूँ, ये फिर भी मैं हूँ, बिकॉज वो तो यू आर मेकिंग इट बिकॉज यू हैव टू मेक इट। बट फॉर मी दिस इज़ थेरेपी। मैं हमेशा ये बात बहुत साल से बोल रहा हूँ, मैं जब वीडियोस बनाता हूँ एक्चुअली मैं अपने लिए बनाता हूँ। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू वॉच इट। बट येस, आई एम गोना स्टॉप ओवर थिंकिंग, आई एम गोना स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, आई वॉन्ट टू जस्ट be happy, which I never thought was going to be difficult. But I'm going to turn 40 this year. This is my 40th birthday. And मैं इस बार जो मैंने सच्ची बात की है, unapologetically, I have already sent invitations to the people I want here. I've only called people who I absolutely are I'm very close to people. I have not called even one person out of politeness. मैंने सिर्फ उन लोगों को निमंत्रण दिया है सच्ची में 40th birthday को, जहाँ मैं I just want those people here. और मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ. I want these people to just come home. हम घर पे chill करें, उस रात को मस्ती करें. And that's my plan. I just want to hang out with people. I don't want to throw an event or a party. I really just want to hang with my closest friends. And that's what I really want. I am thinking a lot about where my life is going, because 40 is a milestone and it is a big number. My mom never reached 40. She was 38 when she passed away. And just remember, nobody in your life will ever be as happy for your success as your parents are, and nobody will ever encourage you as much as your parents will. I have to just stop overthinking. It's something I have to do. And I overthink about the stupidest thing. मेरे को जैसे पीयूष पकड़ के ऐसे बैठता है ना, मैं कल मैं बहुत रोया हूँ यार, वो मेरे घर आया है। What was the point of this video? Mostly just me feeling better. If you watch my life, be inspired by the good stuff about being successful, earning money. Don't make the mistakes that I have made, which is to isolate yourself from everyone else. And don't overthink, which is easier said than done. I'm going to go to the gym now. Big Pucci.